So next topic of the discussion is my properties of the fluid. So first property of fluid is my density or mass density. So mathematical symbol which can represent the density, that is my rho. So it is the ratio of mass upon the volume. So mass of the fluid divided by the volume is called my density of the fluid. Okay. So density is defined as the ratio mass of the fluid to its volume. So we can write rho is equal to my m by v. And the unit is, in case of my SI unit, the unit is my kg per meter cube. Okay. So in case of MLT system, m L की power -3. Okay. So in case of, if I'm talking about the density of water, so the density of the water is my 1000 kg per meter cube. आपका वाटर की जो डेंसिटी है वो आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हमने ये क्यों लिखा है कि आपका ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी आपका 1000 होती है. इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, आपका ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 6 डिग्री. अगर आपसे कोई बोले कि आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी क्या होगी या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी क्या होगी या 7 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी एट एनी टेम्परेचर द वाटर डेंसिटी, व्हाट विल बी द वाटर डेंसिटी. So the density of the water at 4 degree centigrade is my maximum. So at 4 degree centigrade, the water density is my maximum. It means that that is the value of 1000. Okay. At any temperature, the water density will be less as my 1000. It means that at 4 degree centigrade, the water density is maximum and the value is my 1000. Okay.